विकास टेक मोबाइल गुरु में। गैस आज मेरे पास सैमसंग A12 फ़ोन आया हुआ है। दुकान वालों का कहना है कि मैंने इसमें डिस्प्ले जैक डाला और फ़ोन बंद हो गया। तो डिस्प्ले जैक डाला, फ़ोन बंद हो गया। तो भाई इसमें चलो मैंने चार्जर लगाया, अभी कोई प्रकार का चार्जिंग का लोगो नहीं आ रहा है। और मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, जैक डालने के बाद फ़ोन बंद हो गया। ठीक है, चार्जर में अगर डिजिटल चार्जर में देखें यहाँ पे 0.6 मिली एम्पियर ट्रिगर कर रहा है, बट फ़ोन में कोई प्रकार का लोगो नहीं आ रहा है। यहाँ पे 0.6 मिली एम्पियर ले रहा है। तो इसमें हमें जैक डालने के बाद फ़ोन बंद हो गया है। तो भाई इस तरह काम मत करो कि किसी का जैक डालने के लिए फ़ोन आए और उसमें फ़ोन बंद हो जाए। तो हम चलिए इसकी CPMMC को ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी शील्ड को रिमूव करेंगे सेफ मेथड से, SMD से। अब शील्ड को रिमूव करने समय हम जो हमारा टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर हम वही रखेंगे जो हम IC रिमूव करने के समय रखते हैं, 320 से 40 AR60। ठीक है, हम शील्ड इसकी रिमूव कर लेते हैं और इसकी जो CPMMC एक बार निकाल के लगाते हैं, फिर देखते हैं CPMMC निकालने से ये हमारा काम बनता है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हीट ही लग गई होगी। और पावर सप्लाई में बिल्कुल लो बूट 5.6 बूट करता है। डिजिटल चार्जर में 0.6 मिली एम्पीयर ट्रिगर करता है। शील्ड को मैंने निकाल लिया है। अब मैं साइड की ग्लू कट कर लूँगा, साइड की ग्लू कट कर लूँगा। उसके बाद ध्यान देना कोई अगल बगल का कंपोनेंट ना गायब हो। अगर कोई कंपोनेंट गायब हो जाता है तो उस दौरान पे हो सकता है फ़ोन ऑन ना हो। तो इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान देना है, कोई प्रकार का कंपोनेंट ना मिस हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम पेस्ट डालेंगे। हम सबसे पहले MMC IC को बाहर कर लेंगे। और ध्यान देना है आपसे, यदि कोई प्रकार का कंपोनेंट हटता है तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर लगाइए। ठीक है, मैंने यहाँ पे CPMMC को बाहर कर लिया और यहाँ पे मेरा कंपोनेंट एक हिल गया, तो उसे मैं वापस उसी जगह पर हम पेस्ट कर देंगे। क्योंकि बहुत से कैपेसिटर भी सीरीज में लगे होते हैं, उनके कारण भी फ़ोन हमारा नहीं ऑन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जो कंपोनेंट जहाँ से भी निकले आप उसको वहीं पे लगा दीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अभी मैं एक केस देखा हूँ, जो फ़ोन है हमारा Vivo V9 लाइट के ऊपर है, उसका हमने वीडियो बना लिए हैं, अपलोड करना बाकी है। शायद वो 1 से 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाए। बहुत ही एंटी फॉल्ट है उसमें, हमने देखा है। तो आप सब कोई चैनल को फॉलो कर लो ताकि आपको वीडियो मिल सके। ठीक है, हम इसका जो एक्स्ट्रा जो हमारा पेस्ट है रांगा को हम डिसोल्डर से रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद हम इसमें अभी डिसोल्डर को हल्के हल्के चलाना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा फास्ट है, मतलब बिल्कुल 20% 15% वीडियो थोड़ा सी फास्ट है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ले जाना कोई देखता वेखता है नहीं। ठीक है, ये जो ग्लू है इसको हम थोड़ा सा हल्का हल्का आयरन से रिमूव कर लेंगे। ग्लू को आयरन से हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद MMC की तरफ हमने क्लीन कर लिया है। और जो ये वाइट ग्लू है इसको बिल्कुल से क्लीन करना। भी देखो यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर निकल गया, तो इसको भी हमें लगाना पड़ेगा। बगैर रजिस्टर लगाए काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि ये जो एक एक कंपोनेंट किस किस लाइन पर लगे हैं वो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कैपेसिटर ही हो। तो इसलिए जो कंपोनेंट जहाँ से भी निकले उसको लगा दो। ठीक है,
चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। फिर एक बार मैं डिश होल्डर से सारी जो हमारी पैड है इनको फ्लैट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान देना है। आप क्लीनिंग का ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है फ़ोन आपके ऑन ना हो, तो इसलिए कोई प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा ऑनलाइन क्लास शायद 2 फरवरी को स्टार्ट होगा, 1 फरवरी को होना था बट 2 फरवरी कर दी गई है। यदि कोई प्रकार का बंदा इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है मोबाइल रिपेयरिंग, तो वो अपनी सीट बुक करा सकता है। अभी फ़िलहाल ऑफलाइन का बैच 5 फरवरी तक स्टार्ट होगा। ऑफलाइन का भी स्टार्ट होगा, ऑफलाइन में जो आना चाहता है ऑफलाइन में भी आ सकता है, ठीक है। सारी बॉल को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे ऐसे करके, और उसके बाद फिर हम CPU मेमोरी को वो क्लीन करेंगे, ठीक है। ये फ़ोन कनेक्टर डालने के बाद इसमें ऐसी दिक्कत आई, मतलब ये फ़ोन लो बोर्ड में चला गया, ठीक है। तो ऐसा केस में कोई आए तो आप भी CPU मेमोरी को एक बार रिवॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें मैंने शील्ड भी निकाला, कैसे बिल्कुल सेफ मेथड से CPU मेमोरी भी निकाला, मतलब कोई प्रिंट भी डैमेज नहीं हुआ। तो आप भी इस तरह से अच्छे से काम करो। और जो भाई ऐसे करते हैं, जैक डालते हैं फ़ोन बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कस्टमर का 200-300 का काम था, अभी काम बढ़ गया 1000-1200 रुपये का। यदि किसी एक्सपर्ट बंदे के पास ये जाता है तब तो हो जाता है, अगर और भी किसी लोकल बंदे के पास गया तब भी ये नहीं हो पाया। तो कस्टमर का फ़ोन गया तो ऐसा भाई काम मत करो, ठीक है, कि किसी के फ़ोन चालू फ़ोन में थोड़ा सा काम है बंद कर दो। इस तरीके में कस्टमर बिगड़ते हैं और आपको कोई फ़ोन देगा नहीं। चलिए थोड़ा सा साइड साइड का ग्लू भी रिमूव कर लेते हैं और IC रिवॉल्व करके हम इसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. चलिए हमने I've CPU been इंस्टॉल flying कर from लिया है। town यहाँ to पे town, रिव्यू आ from चुका है, मतलब इसमें डिस्प्ले जैक डालने के बाद इसकी जो CPU यूएफएस थी वो ड्राई हो चुकी थी। चलिए इसको कंप्लीट ऑन करके देख लेते हैं।
कि कहीं लोगों को में तो नहीं फंसता ये फ़ोन। ठीक है, लोगों पर तो ये फ़ोन नहीं फंसता है। देख लेते हैं इसको ऑन करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और आप वीडियो मेरी कहाँ कहाँ से देखते हो वो भी कमेंट में बताइए। ठीक है, यहाँ पर फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है और टच वच भी चल रही। ठीक है, कोई नहीं, सब कुछ ओके है। ठीक है।